Lights are and away we go. I'm here, joined by none other than Talha Bin Azhar. कैसे आप था? Alhamdulillah, thank you very much for having me, guys. No worries. And by my side is my co-host Ismail Farouk. How are you, A Ismail? pleasure to be among two motorsports. नहीं वो तो नहीं, proper as in- athlete है मैं तो बस fan But हूँ. still people within the motorsports world. It's wonderful to have you. Likewise, it's a pleasure. Before we carry on, I was kind of like, please hit the subscribe button, hit that notification bell. Talha, please बता दे इनको. Yeah, genuine. Like, you have to subscribe. You have to listen to what these guys talk about. Oh. You'll get that information what's missing. Oh wow, इतना मैं नहीं promise कर सकता पर fit है. How are you? क्या वो आज को क्या चल रहा है आपका? Alhamdulillah, all good. फिलहाल we're just doing Malaysian championship. उसका round 1 अभी ख़त्म हो गया. So I'm back in Pakistan, just working on some stuff at the track. And we'll be flying back soon to finish the championship, the final round. जो अभी आप P5 standings में ना उधर. अभी मैं P5 पे हैं. Inshallah podium on the way, man. Inshallah, looking forward to it, man. We'll do our best. किस डेट को है वो पहला second third round? Second round is on 3rd and 4th of September. You guys have to watch it. Yeah, it'll be live streamed on multiple platforms. Nice. So it's Perfect. gonna be cool, man. Awesome. तो आप कह रहे थे क्या like आप इधर पाकिस्तान में preparation कर रहे हो track पे. तो this is the track you've been working on yourself, ना? Yeah, so Vroom Racing Circuit is a track in Pakistan in Lahore के अंदर. So that's the only track इस time पे which is made to accommodate cars other than just go-karts. So we're also working on launching an academy, have different courses for drifting, circuit racing, motorcycle, off-road and on-road as well. Motorcycle as well. Yeah, so we were recently testing the track out and inshallah hopefully in the future कोई घुटने कोनियाँ लगाएंगे नीचे. Yeah, but in a safe manner. So we're एंजाइटी देते वो बहुत एंजाइटी वो होती है देखते हुए मोटो जीपी Yeah. वाले जिस तरह करीब जा यार रहे हैं. that level of commitment, that level of dedication is just insane. Like आपको पता होता है आपका contact patch इतना से and you are still leaning and going all the way. So we're working on that and our goal is to develop an academy, a school in such a way to nurture the young talent. उनके पास जो रोड मैप नहीं है एक करियर बनाने का मोटर स्पोर्ट्स में, फिर स्किल डेवलप करने का और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का. सो दैट्स द गोल बेसिकली. Wow, that's the fact that आप youth को अभी से attack कर रहे हैं ना, because आप खुद बड़े young हो, आप हम दोनों से younger है भाई. He's only 24, हम 25 के हैं. So अभी से आप grassroots levels को attract करने चाह रहे हैं पाकिस्तान में. आई थिंक इट्स ज़रूरी है क्योंकि किसी भी मतलब एक बड़ी बुकिश कहावत है लाइक यू नो दे टॉक अबाउट द नेक्स्ट जनरेशन कि हमारे जो फ्यूचर है एंड वो सारा. तो ऑब्वियसली हम खुद भी इतने बड़े अभी नहीं हैं लेकिन मोटर स्पोर्ट्स की वर्ल्ड के अंदर ना यू शुड स्टार्ट वेरी यंग. देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टैलेंट की कोई कमी नहीं है पाकिस्तान में. कोई फाइनेंसिस की कमी नहीं है डीप डाउन. काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हैं पोटेंशियल लोग और मतलब कुछ भी नहीं. से द ओनली थिंग इज़ कि अपॉर्चुनिटी नहीं है. एक प्लेटफॉर्म, एक रोड मैप नहीं है कि आपको सामने पता हो कि यार दिस इज़ व्हाट यू वांट टू डू. इधर जाना है ये करना है ये करना हाँ, इधर जाके दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप, दिस इज़ द सेकंड स्टेप एंड दिस इज़ हाउ यू बिल्ड योर वैल्यू एटसेट्रा. है. तो स्पीकिंग ऑफ दैट बिकॉज इट्स अ नाइस सेगवे, हाउ डिड यू become racing driver? What was your journey like? How did you go from step A, B, C to where you are right now? यार I used to be involved in थोड़ा सा motorsports shops around here in Pakistan and they used to have these drag events at the airport और different जगहों पे. तो I was affiliated with these friends of mine at Redland Motorsports and बनाते होते थे गाड़ियाँ शाड़ियाँ और एक बड़ा Saturday night का एक cruise होता था and all that stuff. लेकिन that was just the basis. मतलब एक बस वो था एक तब वो शौक था पर करते करते life had different plans and then I ended up going to Malaysia to study. So I was studying in Malaysia, 2 years went by and third year going into the final year of my studies over there, it just clicked in my mind कि यार मतलब एवरीथिंग इज़ हेयर. एक अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री के अंदर जो है मोटर स्पोर्ट्स इतना डेवलप्ड है. लाइक दे हैड देयर ओन कंपनीज डूइंग मोटर स्पोर्ट्स ऑन अ नेशनल लेवल. So that means doing on a national level means there's a good base. So it was basically in a way एक gamble ही थी. एक वही था lookout था कि यार let's get a car of let's say drift spec because that was the easiest to get.
and I got a car, and the guy who sold it to me, मैंने उसको ये कहा कि यार back trace it for me, the What way does you that mean? कि आप गाड़ी maintain कहाँ से करते हो, connect me to the shops around, Hmm. since this is the car and I'm getting, so that will build a relation ठीक है. with the shops and all this community. So luckily the day he took me to that shop जहाँ से maintain होती थी वो गाड़ी, so I met Bullseye, Talha Bin Hamdan. So he's mashallah the most renowned professional drift driver and racing driver from Malaysia, and amazing guy for his stature, insanely humble और कमाल. So I met him for the first time, and मेरी उससे सिर्फ ये बात हुई पहले. Like I had two main questions. One was, is there a roadmap to do it? Because I was just a Pakistani guy living in Malaysia abroad and for a temporary period of time. So I just asked him, is there a roadmap? And second thing was, can I do it? Like, can I do it as in a guy from Pakistan? इस तरह के मुल्क से हम लोग कर सकते हैं, क्या चीज़ है, समझ तो आए ना थोड़ी सी. तो the way he explained things to me, and in fact पाकिस्तान के अंदर एक और ड्रिफ्ट ड्राइवर था आज से कई साल पहले ना. So मतलब when I went there was only one, so I was the second one, and out of all पूरी दुनिया में से मिला के that guy who I found किस्मत से to teach me is the same guy who taught the other Pakistani in the whole world, right? So that was like a crazy coincidence. So when this happened तो मुझे लगा कि भाई this is meant to be. मतलब ये वो चीज़ें थी जो अल्लाह की तरफ से मुझे opportunities मिल रही थी and doors were opening. So करते करते we started talking, and I told him कि यार this is the car that I bought, and गाड़ी कौन सी थी? I bought a Nissan Cefiro. वो front wheel साथ? Sorry? Front wheel suspension के साथ? नहीं, it was a rear wheel drive car. Basically, do you know Maxima? Yeah. So Nissan Cefiro was the old Maxima. It used to come under the badge of Cefiro, and my car had a RB25 engine, making around 400 horsepower. But I just bought it as it is. Matlab, it was one of the nicest cars for that price range, and it was a good buy. So I bought that car. फिर Zai से मेरी Bullseye से बात होती रही है, उससे मैंने उससे कहा कि यार if there is a way that I can do this, I want to do it. But I want to do it to the next level, because he asked me a very valid question. He asked me like, how do you want to pursue it? सिर्फ शौक के लिए करना है, you want to do it for as a hobby, weekends पे ट्रिप किया, ये किया, you want to do it a professional way, you want to go till the very end, and that is not going to be easy, that is not going to be very sweet and kind and everything. It's going to be a crazy journey, but obviously fun, because that's the goal. So in perspective, I think next the first time मैं मिला तो हाँ, next time उससे मेरी बात हुई थी workshop पे ना, तो he was playing in this drift series called AW series. So that was happening in Malaysia. Kuala Lumpur में हो रही थी series, तो एक छोटी series थी, but he was participating in that. So he invited me over. उसने कहा next week चक्कर लगाओ and have a look at it कि यार क्या flow है, मतलब how does this work and all, just come and enjoy basically. तो I went, जाके मैंने देखा और it was crazy. मतलब the way that drift वाली चीज़ों से मैं ज़िंदगी में पहली बार गाड़ियाँ sideways जाती देखी हैं on throttle और ये और वो, और the way they controlled their cars and the way the cars sounded, and ये सारी चीज़ें obviously just I was mind blown, speechless. तो that was a very good day, a very good foundation जिसके ऊपर मेरा और थोड़ा सा mind उस तरफ गया. Again, all this while we're having discussions ना, हमारी verbal discussions होती थी about understanding the whole industry, whole scenario, कि क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या need to be mentally prepared before jumping into it. So I mean, the way that guy taught me and told me about things, I don't think there's a lot of people in the world that do that. और इससे पहले आपने कभी drive नहीं किया था as a rear wheel drive drifting वगैरह मैंने नहीं की थी. So this was your first time? Yeah, so I had अभी first time भी नहीं हुआ, अभी तो वो देख अभी नहीं हुआ first हाँ, time. I mean like होने वाला है. अभी first time नहीं हुआ. I had driven fast cars, I had driven front wheel drive cars, all wheel drive थोड़ी बहुत चलाई हुई थी, लेकिन I had not driven rear wheel drive race cars. तो वो हुई. फिर उसके एक हफ्ते बाद there is this city in Malaysia called I think Kedah. So it's like KEDAH, right? Okay. So there was a drift competition there as well.
So that time he told me like उसने मुझसे पूछा कि if you want to come over let's go together and देखते हैं. I had never been to a competition or a racing ये event. कौन सा साल है? ये है 2019 if I'm not wrong. Wow, that's really soon, like Yeah. recent. I think 19 में if I'm not wrong 18 या 19 में है पर one of बहुत these recent है. because COVID ने काफ़ी perspective ना change कर दिया. COVID feels like years now. और ऊपर से कोविड एक साल लॉस भी एक तरह Yeah, से. so 18 or 19, one of these. Anyway, we went to Kedah, and I think that was like a 6 hours away, 6 hours journey. And मैं बुलसाई और हम उसका crew था Amy. So we three got into a truck and just started driving fuel, supplies, ये वो चीज़ें. And I was happy to do everything. मतलब to get that experience and it was already started. मुझे पता नहीं था लेकिन मेरी एक तरह से ट्रेनिंग उस टाइम स्टार्ट हो चुकी हुई थी to get used to of everything. So yeah, that was the first time. It was a 2-day event and we went to a different city and we booked a homestay, a complete like a full house at a very very fun and fancy place right nearby the track. और मतलब ये था कि सुबह 6-7 बजे से ट्रैक पे पहुँचे हैं और नॉन स्टॉप पहले प्रैक्टिस सेशंस चल रही हैं देन प्रैक्टिस में आई गॉट ऑन बोर्ड. आई टोल्ड हिम आई वांट टू गो ऑन अ राइड फॉर मी एंड यू नो एक्चुअली ही न्यू उसको पता था कि मुझे बैठना है. तो आई गॉट अ हेलमेट एंड मैं उसके साथ गाड़ी के अंदर पहली दफ़ा बैठा एंड दैट फर्स्ट लैप ही जस्ट वेंट स्ट्रेट फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड इट वाज अ लेफ्ट हैंडर टर्न. तो इट वाज लाइक गाड़ी थ्रो करके ना यूं पूरी आनी थी. नॉट द फास्टेस्ट ट्रैक और द बिगेस्ट पर इट वाज क्रेजी. मतलब जब उसने वो पहली दफ़ा गाड़ी फेंकी ना तो दैट फीलिंग वाज जस्ट अनएक्सप्लेनेबल. लाइक दैट वाज इट. लाइक क्योंकि मैं सामने देख रहा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अभी मुड़ेगी तो हम यूं जाएंगे लेकिन हम जा यूं रहे हैं यू नो. सो दैट मिस कोऑर्डिनेशन ऑफ आईज और मूवमेंट और जी फोर्स और फिर जो उसके एक सेकंड बाद जो एड्रेनलिन रश आया मतलब that was addictive. Yeah, That's the moment you thought. that was the moment that I knew. I thought कि यार ये क्या सीन है भाई मतलब ये है क्या. तो क्योंकि वो जो ग्रिप पड़ती है और साइडवेज जाते हो इट्स इतना वो नहीं था. मतलब कि when you throw the car and you floor it you actually feel going sideways and you feel you're going गाड़ी कहीं backwards. और जा रही थी. हाँ और ग्रिप भी इतनी होती है. तो that was the first time I had ever been in a drift car. ठीक है टैक्सी राइड पे गया. और सेकंड चीज़ मेरी जो सबसे ज़्यादा थी वो ये थी कि यार मैं इनको देखता था ये जाते थे प्रैक्टिस करते रहते आते साथ ही गाड़ी बंद कर देते थे एंड बस गाड़ी चिल कर रही है पानी शानी पी रहे हैं. लाइक एज सून एज दे कम बैक दे जस्ट गोइंग टू शट ऑफ द कार एंड लेट इट कूल डाउन. नाउ व्हाट आई हैड सीन बिफोर दिस एक्सपीरियंस वाज कि यार गाड़ी आती है उसको आधा घंटा पौना घंटा आपने बंद नहीं करना. क्यों? कि जी टेम्परेचर उसका ये ना हो जाए. लेट द टेम्परेचर कम टू अ नॉर्मल. सही है. शायद आपने सुना हो कि लाइक व्हेन यू ड्राइव अ कार यू शुड जस्ट सडनली टर्न इट ऑफ आफ्टर अ लॉन्ग ड्राइव. कूल डाउन करना होता है ना एक तरह से. कूल डाउन वगैरह कूल डाउन वाली चीज़ होती है बेसिकली. सो इन रेस कार्स दैट वाज रियली कूल फॉर मी. मैं कहा यार लाइक यू गेट टू ड्राइव एज मच एज यू वांट टू. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम एंड देन आई थिंक ही केम first or second in that competition, so he got the trophy and that was the first time I felt like part of a team and मुझे feeling आई कि यार you're fighting for a goal and I'm here, the crew is here and the driver is here और हम लोग कोई 20-30 लोग नहीं थे सिर्फ हम 3 थे and we took it and he took the trophy and that was the best feeling of my life for the first time. और उधर से भी फिर वापसी पे वहाँ से मेरा ये स्टार्ट हुआ इसके साथ. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट ड्राइविंग टेक्निक्स स्टाइल व्हाट हैपेंस इन ड्रिफ्टिंग व्हाट इज़ ड्रिफ्टिंग बेसिकली क्या होता है. लोग जो होते हैं द सक्सेसफुल पीपल हाउ डू दे डू दैट एंड दिस एंड दैट ना. तो वो वाली चीज़ों के बारे में पहली दफ़ा मुझे जब वो इंसाइट मिलना शुरू हुई एंड इट स्टार्टेड मेकिंग सेंस के इट्स ऑल अबाउट दी इन अ वे कि मतलब आपके पास रोड मैप होना चाहिए एंड यू हैव टू द प्रॉपर गाइडेंस. तो दैट्स वेयर इट स्टार्टेड एंड अभी तक आप गाड़ी में नहीं बैठे. अभी तक मैं गाड़ी में नहीं बैठा. ठीक है अभी गाड़ी ले ली है सब कुछ हो गया है और वो क्योंकि यार देखिए जब मैंने गाड़ी खरीदी थी आई वाज एक्सपेक्टिंग कपल ऑफ मंथ्स बिफोर आई मीट समबडी. लेकिन द फनी थिंग वाज जब मैंने उससे गाड़ी खरीदी आई डिडंट इवन टेक द डिलीवरी ऑफ द कार एंड आई ऑलरेडी मेट अ गाय.
So that was the second voice, that the second symbol के bro this meant to be. तो उधर से फिर ये decide हो गया कि instead of wasting the car, the very first time I'm going to drive the car, we're going to do a dedicated session. So then we went to this private car park and we went there for donuts and वो वगैरह. तो मैं अपनी गाड़ी पे कहीं पता नहीं किस जगह पे there's this place called नीलाई या कहीं पे, तो I went to buy these used tires जो थोड़े थोड़े पैसों के नहीं मिलते, ख़त्म हुए हुए टायर और यूज़ करके. एंड आई मैंने पूरी गाड़ी भरी डिग्गी के अंदर और सारी पिछली चेयर्स में, अगली सीट में, और आई टुक दैट एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई डिड माय ड्रिफ्ट सेशन. नहीं, so just so I'm clear, everyone's clear. इससे पहले कभी लाइफ में ड्रिफ्ट या पावर स्लाइड की थी? नहीं, कभी भी नहीं. तो मतलब शौक में लोग करते हैं ना, 3 चौक के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं थोड़ा सा, मतलब उस टाइप की, मतलब है भी थोड़ा बहुत, नथिंग प्रॉपर. नहीं, आई वोंट लाई, थोड़ा बहुत उस तरह का था, बट वैसे ही शुगल कल्टस होती थी. बस मुझे बस इतना का शुगल था कि मुझे मतलब मुझे ना साइडवेज का एक बस था क्रेज. नो इन्फॉर्मेशन, नो नॉलेज अबाउट इट, नो लॉजिक, कुछ पता नहीं, लेकिन बस ये पता था कि साइडवेज जो है ना, यू थ्रो अ कार आउट ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोलिंग इट, शायद वो चीज़ हो सकती है. दैट्स इनकरेक्ट कि बस प्रोफेशनली कभी कोई ट्रेनिंग नहीं की थी. नहीं, पर दैट वाज लाइक, वो भी इतना इमेच्योर था ये सारा का सारा कि मतलब आई डिडंट नो. आप उस पावर स्लाइडिंग के भी कपल ऑफ इयर्स बाद तक आई हैड नो प्लान्स कि मैं ये चीज़ करूँगा. लेकिन फिर मैंने किया. This was session number 1. So the reason I'm saying numbers is very important because it's countable. So this was the first session that I did. I think I did total of 9. So the first session मैंने किया and at the same time I was studying in my university. तो by the way, I think आप cyber security पढ़ रहे थे. Yeah, cyber security. तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचे. यार trust me, मतलब सब मेरे से पूछते हैं कि come on man, like ये क्या हुआ है. That's incredible. Yeah. So the first one हमने donuts और figure eights basically की है. Wow. So there's he had a course of it, like he had a complete structure के कैसे, and it also depends on, as a student, it depends on how fast you pick it up. So he told me this one thing, he can teach me everything, but the feel of the car, that is something that I have to मतलब मैंने उस चीज़ को खुद करना है. वो जो रिलेटेबिलिटी की फीलिंग है, इफ़ यू आर अ साइक्लिस्ट देन आपको साइकिलिंग से किसी चीज़ से रिलेट करोगे, लाइक वट एवर इट इज़, वट एवर मेक्स इट फॉर यू, नो, वट एवर वर्क्स फॉर यू. तो वो वाली चीज़ थी. एंड इट वॉज सपोज टू बी जस्ट डोनट्स, पर फिर व्हेन आई वाज ईजी टू डू इट, मैंने पहली दफ़ा किया एंड आई वाज एबल टू कंट्रोल इट. उसने फिर मुझे फिगर एट्स का बोला, तो आई डिड फिगर एट्स एज वेल. तो दैट वाज अ सक्सेसफुल डे एंड वी मैनेज टू डू फिगर एट्स. इतना कर लिया था कि उसने कहा कि अब नेक्स्ट स्टेप, वी जस्ट नीड टू गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. ये पता मैं समझ फर्स्ट ट्राई पे मतलब आपने गियर शेयर लाइक समझ लिया कि मैंने कब करना है. हाँ, मतलब आई कुड रिलेट ना. वो ये चीज़ थी कि वो मुझे बताता था कि बाहर खड़े होके कि यार दिस इज हाउ द कार इज सपोज टू फील. ओके, व्हेन द कार गोज साइडवेज, तो यू दिस इज हाउ इट्स सपोज टू फील. ठीक है, ये फीलिंग होगी. और फिर आपने अपने माइंड में ये काउंटर करना है कि इफ़ अ कार फील्स लाइक दिस, ये करना है. अगर इफ़ इट फील्स लाइक दिस, ये करना है. थ्रॉटल कहाँ देनी है, ये क्या करनी है. सो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड दिस के आई कुड लिसन टू व्हाट ही वाज सेइंग, और बस आई वाज एबल टू अप्लाई टू इट. क्योंकि अभी इस सारे दौरान जी जो पीछे इवेंट्स पे हम गए और इस पे गए, तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस, द फिगर एट्स एंड डोनट्स. तो 3 हफ्ते हम लोग इसके बारे में गप करते गए एंड देन वी वेंट वन डे, सो आई वाज एबल टू ट्रांसलेट इट इनटू अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सो दैट वाज अ वेरी गुड डे. दैट वाज द डे लगा था कि यार मैं चाहता कि लाइक कर तो सकते हैं. आपने 4 साल में ये सारा कुछ सीख लिया बेसिकली. बिकॉज यूजुअली मोटर स्पोर्ट्स का होता है ना कि वो छोटे एज से करें, जो आप कोशिश करें यहाँ बिल्डअप करें. दैट्स वेरी इम्प्रेसिव ब्रो. लाइक yeah, it was pretty cool. It was like just amazing. And this was the first time. So the second time I think we went to wet track to just try to able to wait connect. no, you went to a wet track on your second day for training. Yeah, I mean wet track is yeah, but wet track की basically क्या concept होता है कि when the track is wet, so one is you save tires, and second is the speed is slow. It's actually it takes slower speed to and it's actually more technical in a way कि slippery बहुत ज़्यादा होता वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन speed slow होती है. So if you can control that, you can easily master dry.
क्योंकि ड्राई में ग्रिप ज़्यादा होती है एंड ग्रिप कैन लाइक ईजिली जस्ट स्ट्रेटन यू. सो ये वेट ट्रैक पे शायद वेट ट्रैक था, मुझे थोड़ा ना, लेकिन था ज़रूर यही. दूसरी दफ़ा ये किया, आई हैड दिस बेसिकली एक टीम थी OBG के नाम से, ओल्ड बट गोल्ड एडवेंचरर्स, जो मलेशिया की समझ लें लाइक द मेजर टीम हम लोगों की. पर आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ बुल्सआई, सो दैट्स BZR रेसिंग. सो ये हम सारे इकट्ठे जाया करते थे ताकि पार्टनर्स हों, एक ही लेवल पे डिफरेंट स्टूडेंट्स हों, और करते करते खैर बड़ा अच्छा रिलेशन था. सेकेंड टाइम ये किया और शायद आई थिंक इट वाज अ गुड डे. थोड़ा सा ज़रा ट्रिकी हुआ था बिकॉज मूविंग ऑन टू इट, एंड उस पर काफ़ी 1-on-1 सेशंस थे. तो दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट डे दैट Zai sat with me in the car. अच्छा, इससे पहले आप अकेले इससे थे? पहले वो बैठा नहीं था, या either he sat in the car or he drove the car and I sat beside him to explain. I think that was one of the only times. उसने मुझे बताया और it made sense because connecting longer corners, it takes a little more skill. You have to like somehow take the car and you have to make it reach. Can you explain to the audience कि like एक तो ना जैसे इसमें कह रहा था कि like drifting करते हुए 3 चंक, तो वो ड्रिफ्टिंग नहीं होता, वो पावर स्लाइडिंग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. तो ज़रा समझा सकते हैं ड्रिफ्टिंग क्या है और पावर स्लाइडिंग में डिफरेंस क्या होता है? यार पावर स्लाइडिंग इज़ बेसिकली, मतलब पावर स्लाइडिंग इन अ वे द टर्म डिफाइंस इटसेल्फ लाइक यू आर कमिंग इन हॉट एंड इफ यू आर टेकिंग अ टर्न या समथिंग, यू जस्ट स्लाइड योर कार एंड देन यू जस्ट, आपने एक डायरेक्शन चेंज की एंड देन यू आर लाइक आउट अगेन, यू जस्ट स्लाइड द कार वंस एंड यू जस्ट गोइंग फॉर इट. ड्रिफ्टिंग जो मुझे लगता है, ड्रिफ्टिंग इज़ बेसिकली द आर्ट ऑफ continuously taking the car sideways and then you're on throttle and you're actually maneuvering the car. So drifting is basically you're maneuvering the car throughout the whole track just while going sideways. So I mean pretty much बहुत easy words making, so that would be difference. Drifting का मतलब like you've already decided what to do before you get in the corner. You're already decided and you have a goal, you have a target, you have a place where you want to place the car, you want to know where your front of the car is, you want to know where your back of the car is, you want to know okay इस specific corner से गुजरते हुए you need to be on throttle, you need to be on the e-brake, or you need to be whatever you need to do. मतलब it's already planned. Yeah, that's yeah, it's very high skill motorsports. Yeah, particularly, which is impressive. क्या आपने basically मैं तो 4 साल के था, हमने 4 दिन में लग रहा आपने सीख लिया. यार मतलब अभी that's the thing, like that's the crazy part about it कि ये चीज़ है like let's say like second day finished, we now this was maybe 1 month after the first session. So second one finished, I think another month, 1 महीने के बाद में हम दोबारा प्लान किया हमारा कि यार let's go and test the car out again and play a bit. थर्ड के ऊपर बेसिकली we just दोबारा से जो सेकंड सेशन वाला था we just refocused on it and alhamdulillah was able to conquer that specific set of instructions, and जो उस दिन हमने एक टारगेट था उस दिन का माइलस्टोन था on connecting that. खैर moving on to the fourth day, the fourth session that I did, that was like maybe the first month. That's the easiest way for me to remember it because I used to do it only once a month, once in 2 months because I was studying. So at that time no sponsors, no nothing, so I had to like plan the budget और बड़ी planned practices होती थी because I didn't have the luxury to do as many practices or as many sessions as I wanted to. So but still it was very good क्योंकि जो बीच में gap होती थी तो मैं और Zai, we used to hang out all the time, and whenever I could not drive I would just talk to him. I would ask him verbally to explain to me a certain logic of a certain action or the reaction. So काफ़ी theory है जो लोगों को समझ नहीं आती. तो theory हमारी ज़्यादा है. Like before my first session we spoke for 3 months, theoretical discussion थी before my first session. क्या theory में क्या क्या होता है? Just for layman without getting into it too much. Theory के अंदर basically ये सारा कुछ ये था कि यार drifting का concept क्या है, गाड़ी में क्या होता है, what is the different techniques in drifting, what makes a good driver in drifting. आपने कोई certain connect करना है, कोई चेज़ करना है, कोई पॉइंट्स करने हैं, पॉइंट स्कोर करने हैं, कोई बिग फ्लिक मारनी है, रिवर्स एंट्री करनी है, लाइक व्हाटएवर, बेसिकली व्हाटएवर यू वांट टू टॉक अबाउट. ठीक है, तो जो हमने करना था ना फिजिकली प्रैक्टिकली, तो वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट.
for example, I see this driver driving on this track someday and he does a certain action. उसने यहाँ पे extra throttle दे दी या उसने handbrake 2 दफ़ा किया है. So I just ask him like, why did he need to do it? Why did he need to pull the e-brake? जबकि मुझे लग रहा है कि अगर वो यूँ आ रहा है तो he'll just pop the clutch and maybe he can switch his direction and just go. He wouldn't need to reduce his speed a bit. तो उसके ऊपर लॉजिक होगी कि द फिजिक्स ऑफ द कार, द वेट ट्रांसफर एंड दिस एंड दैट. तो ये वाली बेसिकली ना डिस्कशन होती थी हमारी के कटा चटा गाड़ी का समझने का. एंड उसमें ये बहुत अंडर अप्रिशिएटेड पार्ट है मोटरस्पोर्ट्स का. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक बिकॉज मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है कि पाकिस्तान में बस गोल चक्कर पे चलाते रहते हैं लोग. बट दिस साइंस टू दिस पीपल लाइक कोई ड्राइवर्स इंजीनियर्स खुद भी होते हैं. सो 3 I did it on Sefiro. Right now these are like this thing, like I had Nissan Sefiro right now. Okay. And these are the first 3 sessions of my life. 4th session we went, I think Babar, the other drifter, he was in Malaysia as well. तो हम सारे जो है इकट्ठे गए हुए थे. And I don't know तब कोविड का शायद पहला MCO लगा था वहाँ पे. So MCO is basically the movement control order. So जब वो लगा था ना तो everything shut down and we shifted to mobile games, drifting की ना. एंड घर पे सारा दिन बैठ के ना मैं और मेरे साथ दोस्त वगैरह या बाबर या इस तरह तो वी जस्ट प्ले गेम्स एंड स्टार्टेड डूइंग चैंपियनशिप्स. और early 2020. आई थिंक दिस वाज अर्ली 20. नहीं दिस वाज नॉट अर्ली 2020. कोविड के टाइम 2019 या 2020 कोविड के अंदर when did the world shut down? 2020. Yeah, do you remember what month? February the world shut down. February March में नहीं. So this happened a year before. This happened somewhere in 2019 when basically अभी ये global नहीं गया था but छोटा हाँ. इधर So they started being this is late 2019. Late 2019, yes, correct. So 2019s. So it's probably like November, October time. Yeah. No. Actually, I'm sorry. I'm mixing it up. I'm mixing it with Ramadan. I'm mixing it with Ramadan because this is actually too late. 2019 late के अंदर I had already done my first championship. So anyway, there was some sort of a break for some reason. I can't remember why, and we were not drifting anymore. खैर वो जब when that thing lifted off जो भी था break खत्म हुई and it was the first day back on the track and I just went in too hot with my car कि let's. अब नॉर्मल क्या होता था जब हम जाते थे ट्रैक पे तो वो मुझे कहता था लाइक आई हैव टू टेक द कार आउट एंड मैंने जाना एंड गाड़ी लेके जाओ. Whatever we did in the last session, replicate it. ठीक है, recreate it and we'll see where we have to pick it up. मतलब it was more about कि he used to tell me some pointers and हर run के बाद मैं जब वापस आता था ना तो I was the one who used to tell him कि मुझे क्या लग रहा है कि कुछ गलत कर रहा हूँ. मैं उससे अगर कुछ पूछता था ना वो मुझे कहेगा कि यार what do you feel is wrong. So I could guided discovery. Guided discovery. So I would look back, यार मुझे लगता है like I think this is what's happening. Maybe it could be wrong, maybe it's right. So he would take my feedback and give an example to it on what should it be like. So that was a very good way. Anyway, 4th session पे I broke my gearbox in the first or second run. I made a very very silly mistake. I like whenever you're clutch in or you're handbraking, you have to have your clutch in. So it's like a muscle memory कि आप always your leg and your left leg and your left hand moves together. क्यों हैंडब्रेक और क्लच का क्या? क्योंकि the rear wheels are they वो ट्रांसमिशन पे लगे हुए हैं ना. तो जब आपका क्लच छोड़ा होगा तो that's when the transmission is moving and the handbrake is also connected. Handbrake is supposed to stop the rear wheels. अगर आप क्लच नहीं करोगे तो handbrake से you are stopping the wheels and the clutch or the throttle is actually, so it's like a उल्टी फोर्स दोनों उल्टी फोर्स चल रही हैं. So that time I think I made this mistake and like मैंने शायद clutch पहले छोड़ दिया था and the wheels were still और locked. आप दो if you don't do both at the same time तो आपका gearbox टूट सकता है. Yeah, I mean something would break. Something would break probably. If it's not the gearbox, maybe the long shaft or the axles or anything else. So ये हो गया and I broke that. उस दिन फिर ये पहली दफ़ा जब ये हुआ था कि मतलब मैं 3 घंटे लगा के ना हम लोग we couldn't lift the car, so we just had it on jack stands. एंड हम नीचे ना उसको हैमर कर रहे थे, मतलब थोड़ी मार रहे थे कि यार ये जो गियर बॉक्स है somehow it can get in and we can get back to it कि स्टार्ट कर लें. पर it didn't work out, so I didn't drive. फिर we were back. मैं जाहिर से कि यार मुझे चाहिए था, इसने ये क्यों किया है यार. he came here, वो अभी इस तरह आया लेकिन he couldn't reach that zone. So why couldn't he reach that?
मुझे लगता है कि ये शायद इस वजह से है, तो फिर उसके ऊपर इस तरह करके that's also the day that I first time like we discussed and in a way decided कि let's sell this car. अच्छा, तो This was the fourth session only. ये हो गया उस टाइम के ऊपर. I think I got a BMW E39. So this was the first time that I drove the E39 on the second track. 5वां सेशन सेकंड ट्रैक, और हम वहाँ पे कर रहे हैं. छोटा ट्रैक था, इट वाज जस्ट अ प्रैक्टिस लेआउट. कर रहे हैं. आई वाज एक्चुअली मोर कंफर्टेबल इन दैट कार देन माय सिफिरो. इट जस्ट फेल्ट नेचुरल एंड दैट्स व्हाट दे सेड एज वेल. सो उसके ऊपर डिसाइड हो गया कि अच्छा ठीक है, लेट्स डू इट. ठीक है, इस गाड़ी के ऊपर करेंगे. आई थिंक 2 सेशंस मैंने उस पर किए हैं. दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं लीड रन्स करना शुरू किया. सो 5th सेशन आई वाज डूइंग लीड रन्स. Can you explain to audience कि like drifting इतना popular नहीं है? अच्छा, so basically what we started, the first thing was figure eights. सिर्फ figure eights वगैरह करना. फिर उसके बाद में the next step was कि we have to connect the layouts. कि एक specific एक map है, उसके ऊपर layout नहीं है कि यहाँ से आपका right hander है and then you take a turn and you have to do that. And there are designated zones के on this part of the track you have to be on the outside. On this part of the track you have to be on the inside. That means where you place the car. अब ये होगी चीज़ मेन लेआउट की ना, प्लेसमेंट ऑफ द कार. फिर द नेक्स्ट स्टेप इज ड्रिफ्टिंग इज ऑलवेज अ 2 कार स्पोर्ट. ठीक है, देयर इज अ लीड रन एंड देयर इज अ चेज रन. लीड कार, देयर इज अ चेज कार, एंड ईच बैटल कंसिस्ट ऑफ 2 रन्स, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल द कार ए, द ड्राइवर ए विल बी लीडिंग फर्स्ट एंड द बैटिंग बॉलिंग वाला ना, क्रिकेट वाला हिसाब है, एक दफा बैटिंग करनी, एक दफा बॉलिंग करनी. हाँ, लेकिन जब 2 की आपस में होगी तो इकट्ठी हो जाएगी. Simple way of looking at it. Yeah. That's good for layman. Yeah, that's a very good way. So पहले qualifying होती है. In a qualifications you set up the best runs. For example, when the judges in the briefing they tell you कि यार this is what we want, ठीक है, and this is what we want to do. Because the first thing before we talk about इसमें ये है कि drifting is a subjective sport. ठीक है, it's a judged sport. So there is always human judgment. And the human judges are the ones who tell you what they want to see. They have a certain set Judge of by rules. judge depend करता है. Judge by judge depend करता है. So in drifting, what is judged is line, which is the racing line throughout the layout. There is the speed. There is the angle of when you are going through that drift zone. क्या angle है आपका, like कितने angle पे आपकी गाड़ी tilt कर रही है and you're going. And then there is style. Style is the impact. Style is the most subjective, obviously. Also, because style is style. वो finesse points होते हैं ना. Finesse points होते हैं, and that's more about the impact. Yeah. कि ये जब आया है the initiation, excuse me, how was the impact? So ये 4 चीज़ों पे judge होता है, and usually it's divided in different judges, एक criteria. So qualification में they tell you अच्छा this is the best one. So qualification की setup इस तरह से rules होते हैं, and the guidance and the rules are in such a way that you put up a very nice lead run. ठीक है, कि the qualification run के ऊपर आपकी होगी you are placed in the order. ठीक है, 1 से लेके 32 तक का 32 ड्राइवर्स का ब्रैकेट डिसाइड होता है. बस वो अकेली रन्स होती हैं क्वालिफिकेशन में अलग-अलग रन. क्वालिफिकेशन में अलग-अलग होंगे. मतलब उसको जजेस डिसाइड करेंगे वो आपको बता देंगे कि दिस इज व्हाट वी वांट टू सी, दिस इज लाइक हाउ वी वांट यू टू गो फुल कमिटेड. अगर कोई इस तरह की जोन आ रही है, लेट्स से अगर आप सीधा जा रहे हो तो इट्स लाइक अ एस, एंड देन क्या आप यू आर कमिंग इन वेरी फास्ट, छोटा सा एस लेके देन यू टर्न. So the judges will say कि यार आप full you're coming in hot. जब आप S लेने के लिए पहली डायरेक्शन चेंज करोगे तो I don't want you to slow down. लेकिन आपको पता है एज अ ड्राइवर की ब्रो यहाँ तो दीवार है. So you have to switch fast and then you have to switch again कि आप दीवार को यू रन करते हुए जाओ. And then just for people and myself कि अब 1 to 32 डिसाइड हो गया. अब F1 मैं देखता हूँ उसमें तो होते 32 एक साथ जाती हैं, आपने क्या 2-2 जाती हैं. तो क्या होता है 1 versus 32, 2 versus किस तरह 1 versus 32, 2 versus 31. Sense, yeah. It's a bracket of 32 and they start eliminating drivers one by one. So that also spices it up in a way कि जो best qualifier है वो
जो लास्ट क्वालिफायर है उसके साथ हुआ है, so it's in a way it's uncertain as well sometimes. It's the most upset जो मिलते हैं motorsports में. Yeah. जब भी मैं देखता अच्छा हूँ ड्रिफ्टिंग में drifting champion whenever we watch it, upsets उसमें ही आते हैं सबसे ज़्यादा. Yeah, I mean that's how it starts. So qualification होगी, top 32 decide हो गया, आपका top 32 का bracket बन गया, and then it's like two sides. So पहले आपकी एक साइड का ब्रैकेट होती है वो, और जो विनर्स होते हैं दे मूव इनटू टॉप 16 एंड देन टॉप 16 करते करते फिर टॉप 16 ड्राइवर्स की अगेन 1 and 16 2 and 15 बैटल्स होती हैं, एंड ऑल द वे करते करते फिर टॉप 16 से यू एलिमिनेट, यू प्रोग्रेस टू टॉप 8 क्वार्टर फाइनल्स, then from top 8 you go to top 4 semi-finals, and then it's like फिर semi-finals, फिर finals और third place fourth place battles होती हैं आपकी. ये तो आपने पूरा क्रैश कोर्स बता दिया पूरा स्पोर्ट का. This is brilliant. This is like the competition. The practice starts, the briefing practice वगैरह starts at 7-8 AM, फिर ऑफिशियल प्रैक्टिस होती है और फिर क्वालिफिकेशन ऑनवर्ड होता है. हाँ, एक दिन में सब कुछ होता है. यूजुअली क्वालिफिकेशंस एक दिन में होती हैं, टैंडम बैटल्स एक दिन में होते हैं. और सारी बैटल्स एक दिन में. हाँ, some different competitions होते हैं. So if the first and second जो एंड तक जाएंगे, they will have 1 2 3 at least 4 मतलब 4 बैटल्स तो उनकी होंगी, उसके अंदर उनको डबल करनी पड़ेगी क्योंकि लीड और चेस करें, तो 8, and that's without one more times. Meaning मतलब कि if it's a draw and it cannot be decided, or the runs are too good equally, or they have like mistakes equally, they'll give you a one more time. तो जो top 2 हैं they have to go at least 8 times. Yeah. So they have to fight their way all the way, और पूरा दिन भी होता है और इतनी like करते हैं. That's how the professional competitions work. And गाड़ी सेम रहती है पहली रन से लेके एंड वाली तक. अच्छा, once you qualify in a car, ठीक है, अगर आपने मिसाल के तौर पे किसी कार ए पे क्वालिफाई कर ली है, एंड द कार यू क्वालिफाई यू हैव टू रन इट टिल द एंड ऑफ द competition. That's a park from a rules. हाँ, वही you can have a spare car all the way until before qualifications. वही fun वाला है. If you break a car you can replace, and then otherwise not, you're done. So मैं वैसे पूछते थे कि काफ़ी drifting drivers के होते हैं कि preference होता है what they like to do more. Do you like being lead car or chase car? Yeah, both. It doesn't matter. You like because lead car is like freedom. ठीक है, being a lead car is like freedom. You're just supposed to do your best, and you're just supposed to have fun. Because like this, like ये जो मैं आपको अभी like the symbol, like the ये जो मैं आपको action करके दिखा रहा हूँ, that is true, because like 150 kilometers you're going like this, and if you're going at 150 at this speed, so you're carrying a lot of weight. And when you switch the car, you don't like आपका steering यूं नहीं घूमता. You just go like, you just throw the steering and it like goes all the way, and then you're supposed to hold it. And when the car like reaches on that full angle, that's when you're supposed to either floor it or do whatever you need to do to कि आपकी कोई wavering ना हो, and you're just one shot आप जा रहे हो. So that's the lead का मज़ा. But obviously chase के अंदर जो the feeling in the chase is like nothing else. It's the closest thing to like a fist fight. It is closest thing to a fist fight, because you're literally fighting. आप गाड़ी के पीछे जा रहे हो, so when you initiate, you are literally all the जो आप देख रहे हो is you're looking at their rear wheels or mainly the front wheels. You're looking at their front wheels, क्योंकि आप उनकी wheels पे देख रहे हो, अगर वो wheel यूं जा रहा है, यूं हुआ है, तो you know okay the guy is going to open angle, so you already open angle. Or if you see the wheels going like this, so means he's going to shallow up and go तेज होने लगा, तो I'll just close up and then mimic his movement, and it's going like this, very fast and very quick. It's a proper dance. It is a dance. It's a proper dance. It's a dance of couple of seconds. And कितना लंबा एक बैटल कितनी होती है on average? I think one run average 30 to 50 seconds depending on the track, on the layout. So very intense, very quick. Very intense. Adrenaline very quick. rush. Different tracks, different speeds. For example, अभी NDS वाला this track, I think I was initiating straight line around 150. 140, 150 maybe probably. मैं फिर sideways करते हुए slow down. मैं एक चीज़ ज़रूर पूछना, because you're the first driver I ever met in life, ना, in my 25 years of watching motorsports. मैं पूछना चाहता हूँ कि like वो feeling क्या आती है when you're inside the car, कि आप कह रहे हैं ना कि you're looking at the tires, किसी और की गाड़ी आप खुद भी चला रहे हो, इधर तो लोग एक टर्न सिग्नल नहीं दे सकते ना without moving. तो like आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा होता है? I've always wondered कि क्या चल रहा होता है motorsport driver के अंदर. यार during the run, मतलब
जब तक कुछ चल रहा होता है ना तो इट्स ओनली अप टिल द पॉइंट ऑफ द स्टार्टिंग लाइन, कि जब आप स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचते हो ना तो देयर इज दिस मार्शल, देयर इज द स्टार्टिंग मार्शल एट द लाइन, तो ही इज़ द गाय दैट यू आर लुकिंग टू, के ही इज़ द गाय हू इज़ गोइंग टू गिव यू द ग्रीन लाइट, एंड आपका जो भी ओपोनेंट होता है तो व्हाट वी डू इज़ के वी गिव ईच अदर अ थम्स अप. I love that. कि ड्रिफ्टिंग में आप पहले दूसरे बंदे को अपोनेंट को Yeah, देते I हो mean thumbs we up. just get each other ready. That's in a way like some people. जिस तरह MMA में you touch gloves or Yeah, something in like a way that. के like okay we're here now, let's do it, let's have some fun, and then that guy will be like, come on, you ready, let's go. Yeah. This is actually like MMA. So- That's what I'm saying, closest thing to a fist fight in Yeah, so motorsports. sometimes like it's too intense, martial इस तरह का होता है, और कभी होता है तो उस टाइम तक आप सोच रहे होते हो, but once you are Pack हुई भी होती है fully. क्या Is it like यार मतलब honestly like the competition का pressure, there's always competition का pressure, alhamdulillah it's always there, but you just have to get over it. So you get over it eventually. कभी कभी ये भी होता है आप क्लच लेके पहला गियर डाल के खड़े हैं, आपका पाँव जो है ना हिलना शुरू हो जाता है. हिलना शुरू हो जाता है. so what was it like the first time you were on the line? Yeah. I wanna Yeah, I'd like to get there, but हाँ. just before Yeah, I complete sure. this last bit. 5th time I drove the BMW. 6th time, so 6th time and 7th time, what I did was basically 6th time और 7th time में gap बहुत ज़्यादा था. Apparently कोई some sort of a break थी, और मैंने अपनी BMW I just bought this car, I sold the Cefiro, I bought the BMW, I did one session, I sent it for a complete body build. Full new roll cage, full safety measures, engine gearbox, this and that, interior painted. According to harness, regulations, सब कुछ. Yeah, and I made a 4-door, 4-seater taxi. So normally the cage is सिर्फ अगली 2 seats के लिए. So we bent the cage and we could fit 2 more bucket seats on the back. So और उसके अलावा वो क्यों किया आपने? Yeah, I just wanted to do taxi rides. अच्छा, okay, nice. Yeah, I mean, I wanted to do. I didn't get to do it. Okay. But I wanted to do it. That was pretty much also a unnecessary decision at that time. Because weight ज़्यादा बढ़ जाता है ना उससे. Weight ज़्यादा, काम ज़्यादा, बिला वजह का expense ज़्यादा, ये वो चीज़ not needed. That was wants, not needs. So there's a big difference between wants and needs. एक और lesson था. Yeah, so that was a good lesson. खैर वो किया तो the 8th time what happened was के 8th time ना मैंने एक S14 थी. There was this one S14. It had a 2J in it. So RB25 was the first car. ठीक है, there was a 6-cylinder Nissan engine. The BMW was a V8. No turbo V8. Oof. The third car was a Silvia S14 2JZ 480 horsepower turbocharged car. That was the first time I was ever driving a 2J. So driving a 2J is very different What's than a V8s. 2J? So there's this car called Toyota Supra. बिल्कुल. So I 2J, love it. 2J is a Supra's engine. Supra used to have this engine called Right. 2JZ. It's So a just Toyota's Supra engine. के engine को 2JC कहते हैं. So Yeah. that engine is called 2JZ Okay. GTE. Legendary engine. Legendary engine मतलब 2JZ. Supra legendary गाड़ी है. So 2JZ the world, 2JZ no shit and whatever. I think whatnot, Voina you know. Fast and Furious is all built on this. Probably, yeah. Yeah. So that's that, and it's freaking expensive now. Yeah. 2J engines now. So I drove that car and I fell in love with how 6 cylinders work. अब you drive cars, what the V8 में क्या होता है कि V8 का you just floor is like all the torque is there. 2J is like the boost build करता रहता है and it's like curve and then the boost builds and the torque comes. That gives you more grip, but that also gives you a very curvy power band. तो different driving style होता है. I did that first time 2J चलाते हुए, first time tandem किया and I was like on the door of one of our instructors called his name is Uncle Jet. We call him Uncle Jet. So I was like on his door. So सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक प्रैक्टिस की and non-stop. I think this was after 3 months. I saved up. I bought I think 10-15 tyres. जो पता नहीं याद नहीं मुझे कितने. Non-stop इतना करते थे कि गाड़ी के अंदर ना क्लच और ब्रेक की बॉटल्स होती हैं, सिलेंडर्स होते हैं. सो आपके भी हर गाड़ी के अंदर ना वेयर यू पुट ब्रेक फ्लूइड्स, सही है, क्लच फ्लूइड्स जो डालते हैं. सो द कार यूज्ड टू गेट सो हॉट, दोज मेल्टेड
अब वो जब मेल्ट हो गए थे ना तो इस तरह होता है सिंस आई वाज डूइंग सो गुड एंड लाइक मैं बार बार आता था, मैं उसको बताता था ये मसला है जाई को, एंड जाई मुझे सिखाता था, एंड लाइक आई विल टेक इट आउट कि यार दैट गाय इज लाइक फैमिली. So the way that guy took care of me and taught me, even being from Pakistan, from another country, and the things he taught me is just, मुझे नहीं लगता कि इस तरह बहुत कम होता होगा. तो also giving it to a novice as well. yeah, I mean, like believing in me, bro. Like the thing was that he believed and in you my. just met him at a workshop type. Yeah, and the rest for him to be convinced or believing, I don't know. Allah जानता है कि कब वो convince हुआ कि this kid has potential. But for me, big up to that guy and those people around him to believe in this kid. Obviously, at that time, a nobody. कि यार we can do it. So अब ये जो melt होते थे तो what would happen was the brake would just खत्म, वो अंदर चला गया, वापस नहीं आ रहा क्योंकि वो फ्लूइड कोई नहीं है, और कोई 10-15 रन बाद क्लच भी चला जाता था अंदर. तो हाइड्रोलिक सिस्टम ही सारा उड़ गया. एग्जैक्टली, हाइड्रोलिक सिस्टम. तो वी हैड टू लेट इट कूल डाउन. हम क्या करते थे, हमारे पास सॉक्स उसके ऊपर लगी थी, मोटी वाली जो सॉक्स होती हैं, wool socks. so उसको वुड सोक इट इन वाटर, वुड पुट इट ऑन इट, वुड पुट रबर बैंड्स ऑन इट, अनदर क्लॉथ ऑन इट, सो दोस वो कपड़े उनको पानी के अंदर सोक करना, एंड फिर वो ठंडा भी हो जाता था और वो जो पानी होता था दैट इवेपोरेशन वुड कूल इट डाउन फर्दर. ठीक है, दैट्स हाउ वी वुड रन द कार. ठीक है, मतलब हर रन बाद में वापस आता था, बोनट खोलते थे, pour more water on those like वो सॉक्स पे और उन कपड़ों पे, and it would cool down, क्योंकि वो जो कपड़ा था ना वो थोड़ा थोड़ा करके पानी करता था. That's how I did it. So that day I learned how to drive a 2J engine car. That was also the first time I was ever driving a Nissan Silvia. So both of these things, as the Silvia being a car has a character, and the engine being 2J has a character, you have to understand. आपको गप लगानी पड़ती है इनके साथ पहले ज़रा थोड़ी सी ना, ज़रा समझना पड़ता है कि हाँ भाई क्या मूड है. तो that was the first, and the next, this was like the 8th session और 9th पे when you finally competed. Yeah, let's go to a competition. There was a competition coming out for the first time, and at that time my BMW did not, I think it was in the workshop, I didn't have enough power या कुछ इस तरह का चीज़ थी. So I took this S14 again, and बस वहाँ पे थी वो एक दिन था मेरा जो पहली दफ़ा मैं competition. That was the first time I bought like 20 brand freaking new tires. First time I bought a lot of fuel, I bought a lot of this, a lot of that, and Zai के साथ like I was like nervous of course कि यार क्या है. पर he was there, he was competing as well, मतलब लेकिन अच्छा वो compete भी करते थे, मतलब just for fun, he didn't need to, he would just do it for fun. competition का नाम क्या था? It was called MDCC. So MDCC is Malaysia Drift Charity Competition or something like that. Okay. Na? So I registered for all 3 categories, novice, semi-pro, pro, and I was like let's go all out यार, देखी जाएगी. तो किया मैंने जो पहला practice के अंदर, since I was sharing the car with another guy, and think practice के अंदर पहले दिन ही क्या हुआ था, something in the LST, the differential broke. Oh. मतलब चलते चलते मैंने ज़रा थोड़ा सा I shifted the gears from first to second too aggressively, and the axle came out, and there was a big like stress. वहीं से start हुआ कि oh shit यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुई कहानी, गाड़ी टूट गई है. And there were these amazing people, खैर पूरा दिन लगाते try, would just pop it back in, couple of laps, pop it back in, couple of laps, pop it back in, इस तरह की चीज़ें चल रही. And really close to the qualifying, I didn't get a lot of practice though. Qualifying, we found out कि what broke, जो चीज़ टूटी थी वो हमारे पास नहीं है spare, we can't just run it, we have to get another one. फिर some good drivers, they lent us some parts, मैंने वो डाले. I did my first qualifying run, my second qualifying run, and जब results आए तो I came second, and for the first time ever. On your मतलब, first, my first ever, I don't know how many drivers there were, I think 60-70 drivers overall थे. So in that category I finished second. It was really close with the first guy. जो भी result था, I respect the judges, it was up to the judges, and the judges gave me the second position. It was amazing.
And for me, मुझे इस तरह था कि अगर Zai को my teacher knows and he's satisfied with what I was driving, I didn't care. Wow. And of course he was like You came second in good your scene. first competition. Yeah, so वहाँ से start होके. So I have two broad questions. The first question is obviously कि people will look at your incredible story, the incredible way कि आप इतनी जल्दी you picked up on it and then you were naturally so good at it, and लोग शायद समझें कि ये इस तरह की चीज़ है जो आराम से आप किसी भी एज में पिकअप करके उसको मास्टर कर सकते हो. बट दैट्स नॉट ट्रू दो. मोटर स्पोर्ट्स और ड्रिफ्टिंग के अंदर यू आर एन एक्सेप्शन. मोस्टली बड़ी यंग एज से शुरू करते हैं. तो व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर द ग्रास रूट्स ऑफ पाकिस्तान, जो आपके फॉर एग्जांपल 15-16 ईयर ओल्ड हैं, उससे भी छोटे हैं लोग जो गाड़ियों के शौकीन हैं, जो इन चीज़ों में आना चाहते हैं. what I'm trying to basically say is कि what message do you have for those people जो शायद आपकी स्टोरी सुन के कहें कि यार चलो हम भी इस तरह कुछ 24-25 साल की उम्र में ट्राई कर लेंगे या 20-22 whatever. Yeah, I'd always say कि the younger, even till now in drifting or any sport, the younger the kids are or the younger the driver is, the more fearless they are. ठीक है, this is like the number one thing. Drift के अंदर in fact in competitions like Drift Masters and all, there's this guys 16-year-olds, 15-year-olds. Max Verstappen 16-year-old आया था, रेस जीत गया था. They are not afraid. Yeah. डरते नहीं हैं. Even Max Verstappen, like some of his moves on the tracks, maybe some would call it questionable moves, but those are only when you're fearless. आपको नहीं है डर, आप कहते हो कि भाई ये गैप है, I'm gonna go for it. वो सेना का वो है ना, the day I don't go for a gap is the day I'm not You're not a racing driver. Exactly. So I'd always recommend anybody to start as early as possible. The reason for me to get into it in the first place is मैं चाहता था यार, I wanted to go towards Formula 1 or circuit or anything when I was young. लेकिन I was too far off. कोई रोड मैप नहीं था, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई चीज़ नहीं थी, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई डायरेक्शन, कोई गाइडेंस नहीं थी कि कैसे होता है. तब ये इंप्रेशन था कि मतलब दिस इज़ नॉट फॉर अस, विच इज़ रॉन्ग. क्या रोड मैप है यार? एवरीथिंग इज़ फॉर अस. रोड मैप फॉर अ किड वाचिंग राइट नाउ, व्हाट इज द रोड मैप? यार द रोड मैप इज़ बेसिकली, देखो लाइक इन पाकिस्तान में हम ट्रैक पे काम कर रहे हैं. अब द बेस्ट दैट व्हाट वी कैन डू इज़ टू डेवलप एन एकेडमी, अ स्कूल with all these different disciplines of motorsports, and then all of us alhamdulillah collectively we have enough एक community बन गई है, and these pro drivers or riders और जितने भी different हैं, मतलब पाकिस्तान में इस time there's drifters, there's circuit racers, there's road to Indy racers, there's FIM World Superbike के contending, मतलब उधर के riders हैं. तो यार we have everything, मतलब सब fields में घुसे हुए हैं थोड़ा दूर दूर करके. लेकिन they all doing it for Pakistan, पर some of them are doing outside Pakistan, some of them are doing here in Pakistan. अब the reason I'm in Pakistan is कि यार मुझे अल्लाह ताला ने ये opportunity दी है. My relationship with SA is a blessing for me and a blessing for everyone कि यार we got an opportunity. हम कहते थे कि यार हमारे पास opportunity कोई नहीं है, कोई देता नहीं है, कोई track नहीं बनाता. Track है, अब track है, ऐसे gardens में एक proper track है. Track you're in charge of as well. Event होते हैं, proper है. All we are doing is developing the sporting regulations. And the reason what we are doing is हमारे collectively इतने contacts, resources, connections, networking, knowledge है कि we can completely set up a road map यार for drifting. Join my events. We are planning to do more and more events, make it a seasoned habit. Do more and more events, perform exceptionally well. You perform exceptionally well as a drift driver, I promise you I'll open doors for you and give you opportunities to drive in Malaysia, Korea, Oman, UAE, or like wherever जहाँ अल्लाह ताला ने चाहा, and wherever the world has planned, wherever the fate has plans for you as a driver. But I promise you this much, that we have bases in different countries now. कि आप पाकिस्तान के बाद मलेशिया करो, get yourself a little more used to of international fields. क्योंकि when you do it, आप पूछ रहे थे, you're asking के क्या फीलिंग होती है? पहली दफ़ा होती है भाई, when you are on the starting line, हर तरफ खामोशी होती है, and you know that every single person at the track or the circuit is
just looking at you, मतलब literally मेरे right पे मेरे left पे सारे खड़े होके like everybody is just watching. Okay, right now this guy is going to lift off the clutch and he's gone. So you just have to control that. Yeah, and आपकी टांग कांपने लग जाती है. आपका पाँव जो होता है like sometimes you can your heartbeat is like on fire, आपका दिल तेज धड़क रहा होता है. लेकिन what you do is you just एक आपका एक deep breath होता है. You just need to clear your mind कि क्या चीज़ है. एंड मेरा तो ये होता है भाई, मैं तो सीधा बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ सबसे पहले और मुझे पता है कि मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है. लाइक आई नो एट द स्टार्टिंग लाइन आई ओनली नीड टू नो कि यार आई एम रेडी. बाकी अल्लाह के हाथ में है. एक टाइम तक you just need to be able to be in that spot. You don't need to have you shouldn't carry anything forward from the previous runs or laps etc. You did your best. बाकी अल्लाह के हाथ में है. So once or twice करते करते you get used to it. But obviously I did OIDC, so that gave me good exposure. तो ऐसा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि वापस लेकर जाना चाहता हूँ. क्या जो आप फियर की बात करते हैं ना कि ये fearless drivers होते हैं, आपके अंदर कभी ये fear नहीं था around going like you know close to the barrier, close to the concrete walls वगैरह? या मतलब as a drift driver professional like ओमान के अंदर मुझे fear ये आ गया था. अच्छा. लेकिन fear नहीं था ये एक बड़ा वो था कि एक matured वो नहीं था उस टाइम पे. मतलब fear इस तरह का था कि I was doing drifting, सब कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बस मुझे ये था यार शायद मैं थोड़ा ज़्यादा ना चला जाऊँ. I didn't have enough seat time the first time I went near walls in that specific car. तो वो fear था. ये fear नहीं था कि I would crash. ये नहीं कभी था. ये नहीं था. ये वाला जो fear है ये नहीं आता. ये मतलब मेरा वो है कि यार the more sketchier you are going, the more scarier you are going, the better it is. मतलब सीधी बात है. मुझे तो ये लगता है कि like जितना वो थ्रिल वाली गेम है, जितना आप उस तरह से कर रहे हो ना, तो उतना ही उसके ऊपर बेहतर सीन है. Spoken like a true motorsport driver. Yeah, लेकिन obviously जो मैंने जिस तरह की यार ये छोटे बच्चे देखे हैं ना, 16 साल के, 15 साल के, even in karting, give it to them यार. मतलब karting में तो चलो there is a norm, right? Like these guys do it. Drifting में I didn't know before, मतलब अपने टाइम पे. But there are these kids and they have no fear. मतलब वो जाते हैं तो कमाल. That is amazing यार. And the second thing after your story जो मेरे ख्याल से some people might think is कि आप तो बाहर थे. ठीक है, आपकी जर्नी बाहर हुई, आपके लिए आसान होगा as opposed to doing it in someone doing it in Pakistan. वो सिल्वर प्लेटर वाली पूरी बात आ जाती है. people समझते हैं कि क्योंकि बाहर किया तो बड़ा आसान था. तो what do you have to say about that? उसके बारे में क्या ख्याल है? यार I mean the first thing is कि the struggle is real. ठीक है, मतलब that's a motto that we go by, that the struggle is real. People do not know the type of hard work or the commitment, dedication that we go through, or in my case I can talk about that I went through, and it was insane. The trust, the faith that you need to have, even though sometimes things don't look as good, you need to have it. अगर आपके पास even if you have boatloads of money and everything, you can't buy talent. Maybe you cannot buy that, because that experience that you go through, जो process आपका, that process is actually what builds you up. ठीक है, as a driver, that gives you the value of what's right, what's wrong. I've been a mechanic, I've been not a mechanic, I've been a crew, I've been a marshal, a starting marshal, I've been a flagger, I've changed tires for people, I've put up cones for tracks, I've done every single thing. The reason कि यार पता चलना चाहिए, पता होना चाहिए क्या है. And things that I went through as a driver, मतलब we'll talk about OIDC. So that was a big question of faith for me. कि ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो उस टाइम पे obviously I was studying, I had to manage my finances, and नई प्लेट पे नहीं मिला था. करना पड़ा था, प्रॉपरली प्लान करना पड़ा, पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ा, फैमिली वाज अ पार्ट ऑफ इट, कल्चर को करना पड़ा, पाकिस्तान की इंडस्ट्री को करना पड़ा, एक जनरल पब्लिक को. ये सारी वो चीज़ें इवन, और मुझे अपने उस्ताद को भी प्रूव करना पड़ा कि आई हैव इट इन मी. ठीक है, ये सारे लोगों को एट द सेम टाइम. सो कभी कभी ये भी होता था कि मतलब मुझे पता है कि यार मैंने उसको, अब उसको ये लगता है कि शायद
किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ या कुछ जा रहा हूँ, आई हैव डन एक्सेप्शनली वेल, एंड उसको लगेगा कि यार ये तो पाकिस्तान से एक इंटरनेशनल स्टूडेंट आया हुआ है और इसके पास तो पैसा ही पैसा है और ये पढ़ने किसी और मुल्क में आया और उसने ड्रिफ्ट कार्स रखी हैं और ये किया है, पर उनको नहीं पता पीछे क्या चल रहा है. हाँ नहीं, आई डोंट थिंक एनीवन शुड अस्यूम कि आपके लिए इजी था. अभी हमने पूरा घंटा लगाया है आपकी स्टोरी बताने में. अगर किसी को लग रहा है इजी, फिर आई डोंट नो आपको क्या समझाए और फिर वो खुद कर ले. ये बात है ना. सो अब मैं पाकिस्तान में यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स बिल्ड इट अप, इसको करें इन चीज़ों को. और इट्स नॉट ईजी लेकिन इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल. यू जस्ट नीड टू स्टे कमिटेड, क्योंकि ब्लैंक स्लेट है. कभी कभी इट्स मैं पाकिस्तान की जो ये चीज़ें देखता हूँ ना, सो फ्रॉम फुटबॉल पर्सपेक्टिव एज वेल, तो एक कॉन्ट्रडिक्टरी पैराडॉक्सिकल सी चीज़ है कि इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट कि मतलब क्योंकि कुछ नहीं हुआ हुआ तो आपके ऊपर है. यू गेट टू डू इट, यू गेट टू बिल्ड इट, राइट. बट वही बात है कि वो जो पहले स्टेप होते हैं ना, वो आपको लेने कंसिस्टेंटली, पुटिंग योर हेड डाउन, फॉलोइंग द प्रोसेस, वो बहुत ज़रूरी है. और उसका कभी भी आपको फल फौरन नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा. लेकिन जो आप आज काम करे हो 5-10 साल बाद आप कहोगे कि यार ये चीज़ जो है ना, यार ऐसे भी आते हैं where you question your decisions, and ऐसे भी मौके आते हैं where you are like broken in a sense कि आपको होता है क्योंकि that the whole step is so big that layman or normal people cannot understand कि how to do it, how can you do it. ठीक है, मतलब they cannot understand that troubles और उसके पीछे वो वाली इंटेंसिटी क्या है इन चीज़ों की. So this is one of those things के मेरे कभी कभी ये हुआ था कि at the same time, अच्छा मेरे फैमिली के साथ भी like my family used to be against it in the beginning क्योंकि उनको लगता था ये टाइम वेस्टर्स का सीन है. So I had to prove it to them as well कि this is not, I can actually make a life out of it, I can make a career out of it, you just need to trust me. So this competition, this second place, मेरे वालिद साहब को, मेरी अम्मा को, इनको इस चीज़ ने बड़ा जो है ना उस पर हुआ. एंड देन दे लाइक दे सपोर्टेड. फैमिली की ब्लेसिंग्स जो होती हैं ना, इट डजंट हैव टू बी फाइनेंशियल, लेकिन इफ़ यू हैव योर मोरल ब्लेसिंग्स, योर मोरल सपोर्ट ऑफ योर फैमिली, यार दुनिया फतह कर सकते हैं. आपकी कोई चीज़ रहती नहीं है. मतलब मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट पड़ी आपकी स्टोरी की ना, एक फेथ है आपकी ना. लाइक आप जो ऑफ स्क्रीन में बता रहे थे कि यू मेट योर हीरो एट द एयरपोर्ट, कि फिर आपने पे वो सॉरी ड्रिफ्ट ड्राइवर थे ना वो, सो एंड यू मेट हिम एंड देन आपने उसको क्या बोला था? So I met Ahmed Daham. He came to Pakistan in 2015 or 2016 for some exhibition type thingy. तो that time, ये इससे बहुत पुरानी की बात है. मतलब this is not even like, before you had an idea. Oh नहीं, this was I think 15-16. Oof. मतलब long time ago. And आप A levels कर रहे हो. I wanted to, I think somewhere around that. And मैं गया इसलिए था देखने के लिए. I wanted to see क्या लोग होते हैं यार, ये racing drivers क्या होता है. I met him and he was a very nice guy, very humble, और बड़ी अच्छी गप लगी. And I would talk to him and in fact मेरी उससे बात हुई तो मैंने उसको ना ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा यार one day इंशाल्लाह we'll drift together. If Allah gives me the opportunity, I'll definitely we'll play together. तो मुझे क्या पता था कि यार 6-7 years down the road in Oman, not only we'll be at the same competition, at the same category, in fact we'd be doing a battle together. तो regardless of whatever happened, मतलब that was a highlight. मुझे बड़ा अच्छा उसके अंदर हुआ क्योंकि I met him at his shop after 7 years as a pro driver. So that's where the whole thing started. And full circle एक तरह से. And that's literally what everybody says, it's a full circle. And this full circle was only because of, again, the guy who actually took me on as a student. Bullseye. That is so blind faith up at earth, and it worked out incredibly well. I have a goal. मतलब the thing is कि you should never be afraid to have goals. And goal आपका ना वहाँ का होना चाहिए. ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा goal आपका वहाँ का होना चाहिए. Cause यार you dream it, you'll get it. You have to be a dreamer. And my goal is to be the best driver in the world. Inshallah one day. मतलब it doesn't matter when. अगर 9 sessions के बाद आप रिपीट करें हाँ, तो और सेकंड आ गया. I think पहुंच जाएगा. 10 और रेसें दें. नहीं मतलब inshallah whenever it is, I respect the journey, I respect the pace, I respect the troubles, and
It's not कि I'm like perfect all the way. I get distracted. Over time हो जाती हैं, लेकिन again it's my team. ये सारे लोग हैं, Zai है, Mr. K है, ये जो मेरे जितनी भी teams में, these guys are the people अभी भी you're who with them? remind me again. हाँ, अभी भी you're with them? yeah, oh hands down, every day, any day यार. मतलब Bullseye is literally part of it. Like till whenever, he is always there. He is the guy. मतलब आपको मैं इससे बता दूँ, he is the guy who can actually scold me. ठीक है ना, लगा ये रेफरेंस मिसाल है. नहीं सही है. डांट सकता है, वो डांट सकता है. उस्ताद कहीं पे भी खड़े होके पब्लिक प्राइवेट एनीवे वो मुझे डांट सकता है. और बर्दाश्त, वो रिस्पेक्ट है, वो उसकी टेंशन ही नहीं है. मतलब डजंट मैटर. उस्ताद एक फादर फिगर भी हो जाता है ना. ये वो मेरा उसके साथ तरह इसी तरह का. लाइक नाउ आई एक्चुअली अंडरस्टैंड. जो मैं बचपन में सिखाते थे ना कि यार उस्तादों की आपने एग्जैक्टली. तो आई डोंट नो, दैट रियली डिडंट कम. मतलब नॉट टू से मैं बदतमीजी करता था, लेकिन स्कूल्स के निस्बत ज़्यादा मुझे अब वो उसकी वैल्यू का पता चलता है. एंड मिस्टर के इज एक्चुअली मिस्टर के, दिस गाय आई एम टॉकिंग अबाउट, ही इज माय स्पॉटर. अच्छा, Mr. K is Bullseye's Spotter क्या होता teacher. है? Just tell people. So spotter is basically whenever you're in the car, आप तो ड्राइवर होते हैं, आपको एक बंदा आपके कम्युनिकेशन के लिए बाहर बैठा होता है, जो बाहर से आपकी सारी चीज़ को देख रहा होता है फ्रॉम द आउटसाइड परस्पेक्टिव. सो यू गेट अ हेडसेट ऑन, ही हैज अ book and a notes and like a time stopwatch and all that stuff ready. So a spotter makes notes. वो डिफरेंट ड्राइवर्स को नोट करता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ड्राइविंग स्टाइल, इनिशिएशन, हाउ मच टाइम दे आर डूइंग, कैरेक्टर्स नोट करते हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो अगर मिसाल के तौर पे मेरा स्पॉटर है, तो वो मेरा स्पॉटर मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा ऑन व्हाट डू आई नीड टू डू, व्हाट डू आई नीड टू इम्प्रूव, बिकॉज वी एज प्रो ड्राइवर्स नीड टू वर्क ऑन प्रिसीजन. So precision is key. Precision can be इतनी सी adjustment, इतनी सी adjustment वगैरह भी. Game of millimeters है ना. So that's a spotter. A spotter is a guy who is your lifeline in a way outside your car, and it's a very crucial role. बहुत ज़रूरी होता है, कभी कभी बहुत important और बहुत valuable होता है. आपको एक बहुत wobbly level की feedback मिलती है, which basically makes the difference in winning or losing it. Yeah. So that's a spotter, and Mr. K is my spotter. So Mr. K is Bullseye's teacher. Wow. Who taught him like in 2008. That's incredible. करके. So I'm the third generation of this one, and 4 generations जिंदा है. मैंने पूछा था कि exactly like competing, आपने abroad काफ़ी compete किया ना. Yeah. What is it like Pakistan Motorsports में participate करने का? यार पाकिस्तान मोटरस्पोर्ट्स के ऊपर ये है कि this is again, there's a lot of money in Pakistan. Mm-hmm. There's a lot of passion in Pakistan. There's a lot of यार क्रेज है. मतलब गाड़ियों का तो शौक है हमें. क्रेज है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और पाकिस्तानी वैसे ही जज्बाती लोग होते हैं. तो आपको पता है वो फुल जाना है, जिस चीज़ में भी जाना है तो जाते हैं. तो मतलब ये कि कुछ रहता नहीं है किसी भी एक चीज़ को अचीव करने के लिए. To be the stars in motorsports कुछ रहता नहीं, सवाई मेहनत, long way. और मेहनत के हम इतने फैन नहीं है पाकिस्तान. यार एक वो भी है और एक है डिसिप्लिन. या इन दोनों के हम फैन. डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी है. एक चीज़ थी पाकिस्तान में, छोटा होता था, ये थोड़ा डिफरेंट सा टॉपिक आ जाएगा. छोटा होता था, इंटरव्यू सुनता था, लोगों के व्लॉग्स देखता था, और सारी चीज़ें देख के मुझे लगता था कभी कभी कि यार ज़्यादा ना नेगेटिव पर्सपेक्टिव होते थे बोलते हुए कि यार ये हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, वो करके देख लिया है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता, ये नहीं होता. सो मतलब आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट यार. मतलब आई नो इट्स वेरी हार्ड. मतलब मुझे भी इस टाइम कह रहे होंगे लोग कि ये कितनी क्या बातें कर रहा है, लेकिन आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट, क्योंकि यू नेवर नो until you try it. You never know until you try it. अल्लाह ताला ने एक ब्लैंक चेक आपको, ये जो ज़िंदगी है ना, दिस इज़ लाइक अ फ्री स्लॉट, एक ब्लैंक स्लेट इस लेवल की दी हुई है कि जो हमारे नॉर्म्स है ना किसी कल्चर के, कि ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये एथिकल है, ये लंबा रास्ता है, ये छोटा रास्ता है. to let that define our slate. यार इवन दैट आपके मेरे या किसी इंसानों ने बनाया ना, ये ओवर द टाइम ये कल्चर आपके मेरे उस पर बनाया. जब अल्लाह ताला ने ये दुनिया बनाई थी, अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया था कि ब्रो आपने पाकिस्तान को या सऊदीया को फॉलो करना है या ये कोई इतने से लोग निकले हैं. I mean, नहीं, मतलब दैट वाज अल्लाह ताला ने
वो सारा करके अल्लाह ताला लाइक इट्स अ फ्री वर्ल्ड. अल्लाह ताला ने इतना स्मार्ट इंसान का दिमाग बनाया है कि यू जस्ट हैव टू बी यू हैव टू हैव योर गोल. द नंबर वन थिंग इज यू हैव टू हैव अ गोल. ठीक है, आपका लॉन्ग टर्म पे यू ऑलवेज हैव अ ड्रीम. ठीक है, दैट इज़ योर अल्टीमेट, किधर पहुंचना है आपने. नंबर टू इज़ यू नीड टू हैव गोल्स. ठीक है, द गोल्स इज़ व्हाट टेक्स यू. अगर कोई मेरे आई डोंट नो इफ़ यू वंडर कि यार कभी कभी डिसअपॉइंटिंग से टाइम्स आती हैं. देयर आर डार्क डेज, देयर आर लाइक सैड डाउन डेज कि आपका कुछ नहीं हो रहा है या देयर सम व्हाटएवर इट इज़, एंड देन यू हैव दिस गोल्स. आपका गोल जो होता है टफ मोमेंट से आपको निकालता है. पर्पस आपका माइलस्टोन होता है. दैट विल गेट यू थ्रू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मंथ या वीक या सीजन या व्हाटएवर इट इज़ ऑन टू योर नेक्स्ट. This is actually a pretty deep thing. Psychology में काफ़ी well एक research और ये talked about चीज़ है कि इंसान के अंदर जो लाइफ की मुश्किलात हैं उनको डील करने का, उनको निकलने का तरीका क्या है? थ्रू अ पर्पस नहीं है तो इंसान इज़ नथिंग, ही इज़ गॉन. इसकी एग्जांपल है, आई थिंक बिल्कुल ऑफ टॉपिक है बट और काफ़ी थोड़े डीप वो है, लेकिन देयर इज दिस कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर कॉल्ड विक्टर फ्रैंकल. Are you going way off topic? उसका वो है, उसकी बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग. सो उसके अंदर बेसिकली उसने लिखा था, जस्ट टू रीइंफोर्स दिस पॉइंट, कि सबसे जो वीक लोग थे वहाँ पे वो ये नहीं थे कि जो ओल्ड हैं या जिनको खाना कम मिल रहा है व्हाटएवर. The weakest people and the people who did not survive were वो जिनके पास कोई पर्पस नहीं था, who had nothing to live for out, के बाहर निकल के कुछ करना है. And that is basically exactly this. ये बहुत एक deep वो है, but it definitely proves your sort of point overall के पर्पस बहुत ज़रूरी है, not just for motorsports, for anything in life यार. मतलब इंसान की फितरत ही नहीं है कि वो खाली बैठे. ठीक है, कि वो फारिग बैठे. और फारिग बैठने का मतलब ये नहीं है आपके दिन के 8 घंटे 9 घंटे फारिग गुजर रहे हैं. मीन्स यू नीड टू हैव समथिंग दैट यू हैव टू अचीव. हमने ये पॉडकास्ट इसलिए शुरू किया था ऑन द माइक. यू नीड टू हैव समथिंग टू दैट यू वांट टू अचीव. And I have this dream to be the best driver in the world. जिस तरह मैंने इंशाल्लाह किया है, and not in just Pakistan. Like my dream is to इंशाल्लाह वहाँ पे my dream is to dominate. मतलब अगर वो ड्रीम की बात करें तो you can always dream. Dream is to dominate. There is no such thing as a stupid dream. Yeah, there's no such thing as a stupid dream. तो मतलब ड्रिफ्ट मास्टर्स ये सारे इनके साथ like I want to do that, and I know I can, and I know I have this amazing team with me. I know we can. My dream is to take Pakistan on that level of competitions जहाँ कभी नहीं हुआ. I can confidently say Talha, like the fact that आपने 4 साल में इतना किया है ना, you've reached from like just doing sessions. Yeah, and then coming to this, a lot more that you'll be surprised. I know. I think we can do like 3-4 podcasts on this, but yeah, but even now I think we're gonna go a little bit over time. No, that's fine. I don't mind going over time, man. It's but crazy. I think you're like the perfect poster boy for don't knock it till you try it, ना? Yeah. कि जब तक आपने बस try किया, बस गए एक garage में जाके कि मैंने चलाना है, बता दो क्या करना है, and you got the chance. It is like that. COVID ने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो COVID was I think in a way blessing in disguise for me. Why is that? मतलब the reason because I started right around, this is very wrong, COVID से बड़ी मुश्किलात हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के नुकसान हुए हैं, and it has affected the world in a very bad way, on a very major scale. पर on like for me it was in a way कि I didn't like everything stopped, लेकिन मुझे ये था कि थोड़ा सा टाइम मिल गया था, थोड़ा सा ना बीच में वो एक टाइम मिल गया ऐसा कि I'll tell you how I got the time. Basically OIDC की तरफ हम लोग का एक OIDC was an event that I looked up to. ठीक है, that was something I discussed with Zai कि यार this is something I want to do. I want to go with you as your teammate, as a spectator, and I want to see that event. So for some reason I couldn't go that specific year. एंड करते वो सारा कुछ हो गया. तो सीन उसका ये था कि अब कोविड से बिल्कुल पहले ना, नवंबर में आई थिंक अक्टूबर, आई वन दिस चैम्पियनशिप, दिस इवेंट, MDCC, नॉट चैम्पियनशिप, दिस इवेंट. ओके. एंड नवंबर में, सितंबर और अक्टूबर, एंड नवंबर का महीना जो था दैट वाज द डेट
So OIDC was in talks and हमें लग रहा था मुझे कि शायद OIDC will invite me and they'll accept our मतलब my driver profile and call us over as the Pakistani driver. Out of expectations, out of imagination. यार the next thing I know was कि यार they are considering me के with Zai, पर confirmation email नहीं आई अभी. ठीक है, उन्होंने कर दिया सारा कि अच्छा ठीक है सब दे दिया, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड, कोई ना नहीं की उन्होंने अभी, और वी वर इन होप्स कि यार सब अच्छा चल रहा है. अब सीन ये था कि December 5 was the shipping date of the container. We have to load the container and we have to just let it go. So the car would reach by January 5. November 3 को हमारी बात ये हो रही है आपस में कि भाई क्या करें. कॉन्फर्मेशन नहीं आई ओमान से. अगर कॉन्फर्मेशन का वेट किया सो अच्छा, जस्ट टू पुट इन कॉन्टेक्स्ट, आई डिड नॉट हैव अ कार एट दिस टाइम. गाड़ी नहीं है. November 5 है, November 3 है और गाड़ी नहीं है. ठीक है, कोई इंजन नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ एक बॉडी शेल खड़ा है. November 5 को भेजना है, December 5 को भेजना. ठीक है, कुछ भी नहीं है. लेकिन अब बात ये है कि बिल्डिंग अ फुल कार इज़ अ लॉट ऑफ मनी, लाइक अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज. अब आप मुझे बताओ कि एक चीज़ होगी, वुड यू वेट फॉर द कॉन्फर्मेशन फर्स्ट या क्या करोगे? इफ़ यू बिल्ड द कार फर्स्ट you get the confirmation or not, एक ये चीज़ है. Second is if you get the confirmation and you haven't started building the car yet, can you finish in time or not? I would build the car. ठीक है, so that's exactly what we went with. आपके भाई ने गया, आपके भाई ने दुआएं मांगी, दुआएं मांगता था भाई बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह कि यार अल्लाह ये चीज़ हो जाए. And I think my deep connection with above there was one of the very important things in this, कि I had this blinding faith कि I know this is happening and I have a good intention and have a good reason to do it, तो ये हो रहा है. तो मुझे पता था, मेरे डीप डाउन में था कि यार या अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी छलांगें मार ली हैं तो तेरे बलबूते में दोबारा भी हो जाएंगी. और मुझे एक फीलिंग थी कि शायद इट विल बी एक्सपेक्टेड. भाई वी कैलकुलेटेड इट एंड वी स्टार्टेड building the car. 5th November को I bought a brand new, like not a brand new, a new engine. फिर उसके बाद में 5th November से लेके I think 15th November तक या 17th November तक, और routine was 8 AM in the morning, 3 AM back home, 8 AM in the morning, 3 AM back home. That car बस सोते थे आप. बस सोते थे यार. वो एक मलेशिया के अंदर लिटरली दैट्स वन कंट्री जहाँ मैं घर आके ना वापस बेड पे लेटने में आई फील ब्लेस्ड कि यार लाइक आई एम इन हेवन. आई जस्ट वांट टू, मतलब कि मुझे एसी की हवा पड़ रही है, आई जस्ट वांट टू चिल, यूज माय फोन एंड स्लीप. मतलब इतना टाइम ही नहीं होता था. तो ये मैंने गाड़ी बिल्ड की. हैव यू सीन फास्ट एंड फ्यूरियस? Which one? दी Tokyo Drift. थिंक टू फास्ट टू फ्यूरियस, जिसके अंदर वो सारी गाड़ियाँ आ रही होती हैं और दे हैव दिस पिकअप ट्रक, उसमें सामान भर के कट्ठी शॉपिंग करके जा रहे होते हैं. मैंने नहीं देखी. So basically मैंने इस तरह शॉपिंग लाइक हाउ आई बॉट स्टफ, इट वाज लिटरली अ शॉप फेस्ट. बस एक शॉपिंग कार्ट यार हम जाते थे शॉप के ऊपर, वी हैड दिस पिकअप ट्रक एंड जाना है, जाकर टक 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 एक कंप्लीट लिटरली लाइक एक स्टोर में जाना है, लाइक वन ओके दिस वी पिकिंग अप एवरीथिंग अप, एंड एंड पे ना फुल पिकअप ट्रक भरा हुआ होता था कार पार्ट से. हाउ टू मेक अ रेस कार 101 कंप्लीट. वी यूज्ड टू गो टू द वर्कशॉप, सारे बॉक्सेस रखे दस. Again next day out shopping more, engines, gearbox, turbo, manifold, ECU, wiring, cams, injectors, मतलब everything, radiator, intercooler, इतनी चीज़ें डाली थी उस पर. So I think we built the car. गाड़ी फिनिश हुई थी 17th या 18th को, मैंने सामान पूरा किया एंड 15 को मुझे कॉन्फर्मेशन आई. बट the thing was I did not have any sponsors at this time, right? So this was no sponsors, self-sourced, and this was self funded. I had support here and there, friends of mine, पाकिस्तान के कुछ दोस्त, अपनी थी, donations थी, वो सारा कुछ donations भी मिले थे यार, थोड़ी बहुत थी. मतलब apparently I found this out living in Malaysia कि actually people do help their friends. कि जब नया start होता है तो there are people in the world के जो इकट्ठे करके ना donations या GoFundMe page type इस तरह कर देते हैं कि since it is for the competition, so a specific group or they'll just pool up enough money to cover the cost of that specific thing. crowdfunding.
एंड people do that. तो जो मुझे पाकिस्तान में बड़ा अजीब लगा, इतना नहीं मेरा नहीं था वो इतना ज़्यादा, पर लेकिन obviously regardless फिर मिला तो फिर भी मतलब इतना ही मिला था कि यार बस आसरा मिला था. I wanted like if I want to have all these things in Pakistan. We need to be looking out for each other on this level. मैं किससे नुकसान नहीं होता किसी को भी. मैं अगली यही बात लास्ट पॉइंट बनाना चाहता हूँ कि जो आप एफर्ट्स बना रहे हैं ना, द फैक्ट दैट आपने बस 4 साल में सीख लिया, दिस इनक्रेडिबल. बट द फैक्ट दैट आप जो ऐसे गार्डन्स आप अभी कर रहे हैं, जो आप शुरू में कह रहे थे, यू सेटिंग अप अकेडमी फॉर ड्राइवर्स. सो उसमें आपने रिसेंटली ऑर्गेनाइज भी किया था ऐसे गार्डन्स के साथ, कार्टिंग चैम्पियनशिप था. Yeah, we did a drift day. Yeah, we did a drift day in SA Gardens last year in October. I think that was the first time in the history of Pakistan that there was a proper drift day with a drifting layout, zones, etc. and everything. Wow. And also I think it was one of the events where we had the most number of pro drivers as well. Okay, attendance भी काफ़ी अच्छी. मतलब pro drivers in a way as coaches guide, as क्या बोलें, कोच बोलेंगे, mentor. Yeah, because I did what my goal was कि एक ड्रिफ्ट डे नहीं कराना, एक ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस कराना है. सो इट वाज अ 2-day इवेंट. सो 2 days में क्या होगा कि जितने ड्राइवर्स आएंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, इट वाज द फर्स्ट टाइम वी हेल्प देम आउट विद द ट्रांसपोर्टेशन अ लॉट. वी गॉट कार्स फ्रॉम कराची टू कोयटा से लेके पेशावर, फैसलाबाद, सखर, लाहौर, यू नो अ लॉट ऑफ प्लेसेस. तो पहले 2 दिन का मकसद ये था कि वी वुड गाइड देम. So there is this people like Babar. Babar is basically the other drift driver who used to do it before me. There's Adil, Babar's brother, Taimur. So these guys, they have experience, they have knowledge in drifting. They have been around, they have exposure. तो हम लोग सारे इनको मैंने बुलाया. अब इन सारों को मैंने बुलाया कैसे है, लाइक कराची के अंदर काफ़ी मैंने सुना था कि ट्रेंड है, and I came to Pakistan because of COVID. Okay. And this was another thing कि it's meant to be कि when I came back I got in touch with SA और ये चीज़ें मिल गई. So this was ना, मुझे ना reinforcement मिलती रहती हैं. जब दुख मिलते थे तो फिर reinforcement भी मिलती थी कि bro सही जा रहा है. सही. तो मैं भी कहता हूँ आपका faith strong था ना. Yeah, so इन सब के यार I went to Karachi for the first time in my life. Oh. To meet all these people. इन सब के मैं घर गया, इनकी workshops किया, इनको एक को मिलने गया, to invite them कि भाई ट्रस्ट मी, ट्रस्ट करें हमें, जस्ट ट्रस्ट दिस के एंड प्रॉमिस कि यू गाइज विल कम ओवर एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज, बट वी नीड यू गाइज टू एक्चुअली कम एंड एक्सपीरियंस इट. क्योंकि मैं नहीं जानता था तब, मैं पाकिस्तान आया था, आई वाज़न्ट इन द कम्युनिटी दैट मच एंड आई वाज़न्ट शाय ऑफ जस्ट हिटिंग इट अप, मैसेज करके कि यार भाई आई वांट टू मीट यू, आई एम कमिंग टू कराची, लाइक आउट ऑफ माई ओन पॉकेट. अदील से मिला, ताहा, ये वो सारे जितने, इन सबको फिर एंड पे वी बुक देम लाइक फ्रॉम डिफरेंट मेजर सिटीज़. वी बुक 22 व्हीलर वाले ट्रेलर्स केम टू लाहौर. ठीक है, एंड दे केम टू लाहौर और 3 दिन का पहला इवेंट की पहले दिन किया ट्रेनिंग, मतलब गाइडेंस कर रहे थे, साथ साथ बैठ के एक लेआउट बनाया कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू, दिस इज़ हाउ यू डू इट. सेकेंड दिन गुजरा, थोड़े और लोग आए, स्पेक्टेटर्स भी आए, एंड उनको करवाया ड्राइवर्स को मज़ीद कोचिंग, गाइडेंस दे आर गेटिंग बेटर. ठीक है, we enforced to put helmets and roll cages and seat belts and whatever. Obviously everybody did not have a roll cage, but we didn't go tandem. तो थर्ड डे फिर हम लोगों ने एक इनके लिए ना वो रखा, a competition. So the CEO of SA Group is like a very amazing dude. He's a very amazing guy, and he has this vision for the people of Pakistan and from the people of this region in the world of Asia. कि यार हमारा कुछ कम नहीं है, मतलब इधर की जो he gives this example of खुरासा का, पता है आपको, like there is this like saying that कि जब आएगा ना, जब वो सीन डलेगा बड़ा एंड पे, लड़ाई जो मेजर लड़ाई होनी है उस पे जो मुसलमान उठने हैं ना, वो अपने वो खुरासा, वो लाइक दिस रीजन से यू नो दे आर सपोज्ड टू गो. तो मतलब he gives that example in such a way कि यार इधर के लोगों में कमी किसी चीज़ की नहीं है, अपॉर्चुनिटी की बात है, लेट्स वर्क ऑन क्रिएटिंग दैट अपॉर्चुनिटी. सो दैट्स व्हाई ही सपोर्टेड मी रियली वेल इन दिस इवेंट. थर्ड डे हमने कहा लेट्स गिव इट बैक टू द ड्राइवर्स, एक कंपटीशन रखते हैं, प्राइज मनी वगैरह सारा कुछ. सो थर्ड डे हमने कहा कि ठीक है, ट्रेनिंग एंड पे वी गोना डू अ डोनट कंपटीशन एंड अ कंप्लीट सोलो रन ड्रिफ्ट कंपटीशन व्हिच इज AKA क्वालिफाइंग कंपटीशन.
Incredible. Yeah, we did it. Adil was this guy, Adil R35. He came first in that competition. And after he did that, he did Emirates Drift Championship. He did Jordan Drift Championship. Wow. And Kani Utki. And So the first time we got like 17 cars. दूसरी बार we got 20. Third time we got 25 cars. मतलब मैंने पहला वाला जो पब्लिक के साथ कराया, दूसरा प्राइवेट कराया, तीसरा प्राइवेट कराया, अब हम दोबारा पब्लिक कराने लगे हैं सीजन 2. Bro, we partnered up with a social media. We got a social media partner, and the only place that there was any marketing or anything was on their page and on our own room's page, and the rest was only word of mouth. We got around 6,000 to 7,000 people in 3 days, bro. Spectators. No marketing. No marketing. Wow. तो वो इतना अगर कोई डाउट करता है कि ये सीन नहीं बन सकता है विदाउट मार्केटिंग एज वेल. So I believe कि if there is enough मतलब targeted reach कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, and the whole goal about that was कि यार just come and enjoy. कोई मुश्किल चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, let's just come and enjoy and to create that concept and that trend. क्योंकि देखें मैं like जो pro motorsports होती है ना, obviously like any other sports like cricket, like football, it's part of the entertainment industry. ठीक है, I mean I think you'll agree with this कि like on that level वो जो sport है वो सिर्फ ड्राइवर के लिए है, या वो जो एथलीट, वो जो बैट्समैन या बॉलर वो उसके लिए है. मतलब वो सारा, लेकिन उसमें जो इंडस्ट्रीज, जो कंपनीज और वो सारा इन्वॉल्व करें, जो घर पे बैठे लोग, इट्स एंटरटेनमेंट. इसलिए तो T20 बना था. हाँ, exactly. To be quick and like मजे. we both don't like T20. हम टेस्ट मैच देखते हैं. शौक से टेस्ट मैच देखते हैं. शौक से. यार नहीं यार, मैं T20 देखता ही नहीं हूँ. I mean, this guy, I can watch 24-hour races. Test match देख लेता हूँ आराम से. No, I love watching endurance 24 hours. Endurance is incredible. कमाल सीन है. Spa and all that. Talha, it's been so wonderful to have you here. I'm so happy कोई आया है पाकिस्तानी मोटरस्पोर्ट की बात करने के लिए. नहीं यार, for sure. मतलब there's a lot of things. There's a lot of things in Pakistan that we can explore. एक साल कोविड के मैं इसलिए कहा था, it was a blessing कि एक साल के अंदर सब कुछ रुका रहा ना जब, so it was a very good opportunity to understand the industry around, to understand the people around कि लोग क्या सोच रहे हैं. You use your time well. ठीक है, तो there's a lot of networking, there's a lot of everything. अब सिर्फ ये चीज़ है कि to get more and more companies and more organizations involved, make it an industry like cricket and football, जहाँ पे events के अंदर join in करें ये companies वगैरह, and then they go with their different drivers and उसको broadcast करें, showcase करें, prepare best of the best drivers, get them to represent Pakistan in the world यार. Inshallah man, I can see it happening यार, कि like गाड़ियों को शौक है हमारे मुल्क को. बाकी there's a lot of बहुत चीज़ें हैं bro, like we can discuss a lot of stuff. I think I'd love to have you on again afterwards. Oh, sure. आप जब आएंगे inshallah when you go back to Malaysia, आपके आगे कितने और competitions अभी हैं? Yeah, right now our season is I think we're committed to 3 different championships. Right now we're doing the NDS. And you can watch them all live, na? Yeah, so NDS is the National Drift Series Grand Prix. It's happening on 3rd and 4th September. It'll be live on NDS. There is a page called Retro Havoc. There is a page called Drift Kings International. So it'll be live here. Then, I'm live. Yeah, it'll be live. In November, there is Drift Kings Asia itself, the international championship. Oh, okay. So that will also be live. Then in January, there's Oman International. Oman is like the hot spot. It is the hot place, man. Like literally, the best drivers, the best live stream, the best commentators, the best everything. Wow, it's an amazing event. So all of these are going to be live, and inshallah, we're gonna go do our best, take the flag. इंशाल्लाह मैं कहता कि प्लीज़ फॉलो दिस मैन. इंस्टाग्राम इनका नीचे लिखा होगा, इनको DM करे, टेल हिम हाउ मच यू लव हिम. इनकी वजह से पाकिस्तान का झंडा आता है मोटर स्पोर्ट्स की वजह से. It's an honor for me. No, to be honest. It's an honor for us to talk to you, man. Thank you so much. You guys should support our athletes. Yes, please. Support the athletes and the whole industry. Probably like sports होनी चाहिए यार, जैसी मर्जी हो. कोई भी स्पोर्ट है. Yeah, check out. You guys should definitely visit the track, and anybody out there, I would like to actually please do check out the Vroom racing circuit. You guys are in for a surprise.
आपके टी-शर्ट पे लिखा हुआ है. Yeah. Yeah, so this track you guys are in for a surprise and we're doing our best. हम लोग proper उसकी planning कर रहे हैं, preparations कर रहे हैं. We have a good team. We have very dedicated and committed people for Pakistan, जिनके पास opportunities बहुत ज़्यादा हैं और they can do a lot internationally, but they have chosen and they want to be a part of Pakistan and take it further. So I hope we can deliver it and have some fun, man. We're definitely going to be there. मैं तो पहुंचूंगा. Oh, bro, on it. I'm going to cover the entire thing. On it. Something is coming. By the way, Drift Day is coming. Let's just leave it to that. Oh, something a is little coming. teaser. See, Yeah. on the mic हर चीज़ मिलता है आपको. Yeah, get ready. It's I was going to ask you to give a message at the end. आप तो खुद ही दे दिया. Naturally. The messaging, like if you were to ask me what a message is, just this कि यार never stop dreaming. मतलब never stop dreaming. आपको कभी कभी ये होता है जब whenever you do something new, you are always going to have haters or people who dislike you or people who are not going to support you. आपके खिलाफ लोग होंगे, leg pulling बहुत ज़्यादा होगी, इतने developed industries organization से आपको इस तरह का मिलेंगे that you will be surprised, but never give up. Like that's literally the thing is कि never give up. भाई जिधर से आप कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही आपने एक कट मारना और फ्लोर कर देना है. So keep dreaming, never give up. We'll talk more later. Of course. Thank you so much, Talha Bin Azhar. I don't have much more to say. आपने जो कहना चाहिए था हमने कह दिया. Thank you so much for this. I'll definitely have you on again. Please, you can expect, Talha is also one of the first in Pakistan Motorsports. After this, you can expect many more guests. I'm definitely going to call them on. Aap bhi phir aana. And we're going to keep talking about Pakistan Motorsports, take it further. We're going to cover, this is just another sport On The Mic is going to cover. एक और niche sport हमने ले लिया है जिससे views नहीं आएंगे हमारे, but we're going to start it. Yeah, आएंगे views bro, आएंगे. Inshallah आएंगे. Yeah, I just remembered like, sure. I just want to put a quick thing Go here. Go ahead. Basically, it's a quick shout out to all these drivers जो अभी तक जिन्होंने ट्रस्ट किया और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान के अंदर. There's these amazing drivers like Adil. There's Power, obviously is an established driver, but Adil, Omar, Yavar, Osama, Taha, all like there's a lot more names that I'm skipping, but these drivers are the drivers who have tried and pursued something. They have set up their goals and they have their own pace. उन्होंने करके दिए and they have, I would like to give a shout out to their hard work and their absolutely their willingness कि यार कुछ करना चाहिए हमें और इस चीज़ को नया करना चाहिए. And also a shout out to all these people that I talk to on Instagram जो questions पूछते हैं इस चीज़ के बारे में यार कि क्या करना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए. तो जितने सारे लोग हैं इनके लिए कि मतलब just stay committed, stay dedicated, never give up on this. And also to the existing companies and partners and sponsors that have been on this journey with me, especially to SA Group, to Vroom, who have been a part of our drift career. And other than that, FTN Racing Suspension, Lucas Oil has been supporting us in Malaysia, and LSF, Autoworks, Redline Motorsports, Blaster Cars. तो ये मेरा मकसद सिर्फ इनका ये है कि यार these are those people या companies who have actually taken a leap of faith and who have taken that step. So I believe a lot more can do, a lot more can take it a lot further for everyone. That's beautiful. So that's my piece. I love it. Talha, you started off as a student, आप आहिस्ता आहिस्ता master बनते जा रहे हैं इस चीज़ पे. You never stop learning. No, of course. That's I think there's a lot of lessons to learn from all what you've told us, your story and everything. Yeah. I'd like to just say, please hit the subscribe button. You can expect more content like this. Hit the notification bell so you're the first one to watch it. Go follow Talha. I'm going to say that again. Make sure you show up at SA Gardens ke track pe. Kala Shakaku mein. Kala Shakaku with the Vroom Racing Circuit. Vroom Racing Circuit. All of that will be in the description below. And I'd just like to say that Ismi will like you too. Take it easy. And I always say bye-bye. I'll see you when the checker flag drops next time.